Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our new chapter, which is equal employment practices in Pakistan. Usually, this is known as EEO laws, equal employment opportunity laws. They're also part of the labor laws, but they're going to be talking about that how, when it comes to different caste, different color creed, and different people, how to make sure that they're not being discriminated in the organization. So let's start with the definition. Equal employment opportunity and laws related to it prohibits the discrimination against anyone on any excuse. So when we talk about the EEO laws, we are actually talking about the discriminations taking place in different businesses, in different organizations. So EEO speaks of the equality of every human being, irrespective of the gender, religion, caste, ethnicity, color, age, physical disability, etc., while considering a candidate before, during, and after the employment. Now, we'll talk about this CEO laws a little, and then we'll move forward and see what we have in the next slides. Now, the main idea behind these EEO laws is that many of the organization uh, sometimes they discriminate people. For example, in many countries, especially in developing countries, there is a problem of which you can call as nepotism, which means that people give jobs to their relatives. And there is a problem of cronyism, which means that people give jobs to their close friends. Not just the relatives and the friends, sometimes people are discriminated on gender basis. Sometimes women are not given jobs, and sometimes men are not given jobs. Sometimes people are discriminated based on religion. uh, it depends what is the dominant religion in that country. For example, in Pakistan, if you have the majority of the Muslims, so maybe non-Muslims are being discriminated. And then also in certain areas, people also discriminate with regards to the caste, ethnicity, and color, which is not much of our problem, but obviously in in developed countries, this is one of the big issues. Sometimes age-wise, you're being discriminated, and sometimes physical disability is one of the reasons why people discriminate you. So we'll talk about them, but at the same time, our EEO laws, they prohibit any sort of discrimination based on any of these reasons. And while considering the candidate before, after, and during the employment. Now, we need to understand what do we mean by this before, during, and after the employment. For example, let's talk about before the employment. Before the employment, obviously, if we can just talk about a little about recruitment and selection processes of the organizations. Now, how do we define and understand recruitment? Recruitment is the creation of a pool of potentially capable candidates, which means if you give an ad of a job, and when people start applying, and for example, if you say that certain date is the last date to apply, and certain time, which is 5 o'clock in the evening, is the last time to apply. So by that time and by that date, suppose you have collected 200 applications total, people who have applied for the job.
So 200 applications that you got it through some process of recruitment. Like you've given ad, you might have contacted people, you might have asked your current employees to recruit people for you. So there are multiple ways. E-recruitment is currently being used by different organizations. But no matter how you do this recruitment, if you are including certain types of things in your recruitment which are not required to be put in your ads and in your recruitment process, but you're doing it to just discriminate some people, then you are actually doing the discrimination before even they become part of your organization in the recruitment process, or sometimes in the selection process, because the moment you got all the applications, your recruitment process is finished. Now you will have to select, for example, let's say 20 people out of this 200 people. But what you do, you select the best ones, the best 20 people. Now, how you're going to select these best 20 people? Obviously, you're going to give them some test. You're going to do some interview. You're going to check their references. You're going to check their experience. So, while applying these tools, you might apply different tools which are suited to, for example, one religion, not suited to the other religion. Maybe they are suited to one gender and not suited to the other gender. So if you're doing any sort of discrimination before they become part of your organization, then it is actually against the EEO laws. Now, please keep this thing in mind, that we are not saying, if the requirements are such, if the job requirements are such, and then you are including a few things in your recruitment and selection process, then it is fine. But if job requirements does not say something, but you're still including things which discriminate people, we will be talking about this in the end, then it is a violation of EEO laws. Now, how do we see this happening during the employment? During the employment, obviously, uh, when we talk about internal hiring or promotions or career management, we talk about people who are being promoted from one level to the other level. So suppose if you have three people with you, if you have three people, and suppose all three of them are capable, and just out of discrimination, for example, A suppose belongs to certain caste, and C belongs to certain caste, different one, and B belongs to certain caste which is different. So all three of them have different castes. So suppose the person who's responsible for making the decision of the promotion, he or she is going to promote B because the caste of the person who's making the decision and the caste of this person B are the same, and because of this reason B gets the promotion and A and C do not get the promotion. If this is the case, then during the employment you are discriminating A and C. Obviously, if B is more capable than A and C, then it is a separate thing. But if all three of them are capable, or C or A is more capable than B, but still we are preferring B because he or she has a different some caste, that is a discrimination. It is during the employment, because now they are part of the organization, but just uh, on the basis of caste, you're promoting one person and ignoring or discriminating the other person. And then if we say after the employment, how do you say after the employment? For example, when people are retiring and you calculate their horizontal pension or the lump sum amount that you'll have to give them, or some other things when they are retiring. So maybe when people are retiring, you're not calculating uh, based on the right formula for some people. Maybe you're under calculating
the pension for some people, and you're over calculating the pension and the lump sum amount that you're going to give them on some different basis, that means you're also discriminating after the employment. And maybe, for example, it's not always about money. Maybe if two people are retiring and there is a clearance process, and you take, for example, 15 days to do the clearance for one person, and you take, for example, 7 months to make the clearance of the other person, just because the one we talked about earlier जिसको 15 दिन लगे हैं, वो आपका रिलेटिव है या वो आपका फ्रेंड है या वो आपकी कास्ट का है या आपका लमनाय है, एंड दूसरा जो है वो इस तरह रिलेटेड नहीं है तो उसको आपने ज्यादा टाइम ले लिया. सो इवन देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रोसेस. सो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉज जो हैं ये हमें मना करते हैं कि इस तरह की किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एम्प्लॉय के साथ ना हो. नाउ देयर आर affirmative actions. Affirmative actions जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो affirmative actions को परफॉर्म करती हैं. किस लिए परफॉर्म करती हैं हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये किस किस्म की प्रैक्टिसेस होती हैं. These are the conscious efforts to compensate past unfair and biased practices in the organization. अगर ऑर्गेनाइजेशन से प्रीवियसली कोई बायस्ड डिसीजंस हो गए हों या अनफेयर प्रैक्टिसेस हो गई हों तो उसको वो कॉम्पनसेट करने के लिए फर्मेटिव एक्शंस करती हैं, जिसमें क्या होता है, द प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज ऑफ फेवरिंग इंडिविजुअल्स belonging to a group known to have been discriminated against previously. It is also known as positive discrimination. It is also known as reverse discrimination. So, organizations consciously make this effort that people who have been discriminated in the past should be compensated or should be dealt with a little bit of more positivity. So, you encourage those people. For example, if you have jobs and if you see that an organization has been discriminated in certain caste, then affirmative actions will be that in the next recruitment and selection process, they will be preferring the people who have been discriminated previously. So these kind of practices are known as affirmative actions. Now, Article 27 of the Constitution of Pakistan prohibits discrimination based on gender in services of Pakistan laws and further make it obligatory to take steps to ensure full participation of women in all spheres of national life. So this is specially written in the law that women should be made part of uh, all the organizations and they should not be discriminated. And then, according to Article 34 and 38A, it is the responsibility of the state to work for the well being of people of Pakistan by raising their standards of lives and taking steps to prevent concentration of wealth in few hands and exercise of equal right between employer and the employee. So, it is the state's responsibility, which is also it trickles down to the organizations as well. It is the organizational and state responsibility that they should take care of the uh, quality of life, the standard of lives people are living, and then state must see that concentration of wealth is not going in a few hands, but it is as much as it is possible, it is being distributed among everybody. Now, on 30th April 2000, the federal government announced labor welfare package for workers, making it obligatory for the organization to offer gender equality and affirmative action. In summary, it permits equal remuneration for men and women for work of equal value
through appropriate legislation. We'll just talk about this thing in a little while. The second point is enhancement of maternity benefits for female mine workers. The safeguard against sexual harassment through appropriate actions. Recruitment of female labor inspectors for enforcement of labor laws on female workers. Now, first, we're going to talk about equal remuneration. Remuneration is, you can say that it's a pay. It's the it's the compensation to the employee. Now, this issue is not only in Pakistan. This is a global issue. Many countries are facing this issue that men and women are not being paid equally. Now, when we read this, we don't have a very good idea what we're talking about. But the simple way to understand this thing is that if men and women are performing the same job, they should be paid the same. Not in our country, but in many other countries, there's a problem that even if women and men are performing the same jobs, women are being paid less amount than it is being paid to the men. So actually होना क्या चाहिए? आप जॉब इवेल्युएशन करते हो. जॉब इवेल्युएशन का मतलब है कि कौन सी जॉब क्या वर्थ करती है. For example, if you're paying a CEO, for example, 5 lakhs, 10 lakhs of rupees, and you're paying a normal clerk, for example, 30,000 rupees a month. So why there is a difference, that why you're paying 10 lakhs to somebody and why you're paying 30,000 to one person is because of the job evaluation system, which means you need to evaluate all jobs and then see what is the worth of one job based on maybe qualification, based on the decision making capability, based on the creative ability, based on the experience. There can be a number of factors. But if, for example, let's talk about a medical doctor. If a male and a female medical doctors, they have the same education, same experience, and they're performing the same job, they should be paid equally. If you don't do that, if you're just discriminating a man or a woman and not paying them the same amount, then there is going to be a problem that you're not paying the equal remuneration. So, according to EEO laws, you need to pay everybody the equal remuneration, not only on the basis of gender or sex, but on the basis of caste and all other factors. So, equal pay, equal remuneration should be done according to the EEO laws. Then some maternity benefits have been increased for mine workers. Initially, they were not that good. So after 2000, they have been increased. For example, the number of paid leaves have been increased, and other laws related to maternity benefits have been enhanced. Then third thing is the safeguard against sexual harassment. Now, sexual harassment के लिए 2010 में there is a special law passed by the Pakistani legislation system 2010 जिसमें it is a special law and her organization के लिए it has become obligatory that they will have to form a committee which is going to look after if there's any discrimination, a complaint can be filed to this committee, and there has to be one female person part of that committee. This committee, within certain days, have to give a decision. We'll have to call the person who's complained, and like we talked about a trial, so they're going to do a small trial. So they'll have to give a decision. Once they have given a decision and a person, any of the persons
If they did not like the decision, they have the option to go to ombudsman person, जिसको आप यूजुअली वफाकी मोहतसिब कह रहे होते हो। सो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड ना हो, तो आप वफाकी मोहतसिब के पास जा सकते हो और उसके पास उसकी अपील फाइल कर सकते हो। सो ये लॉ भी अब काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, और पाकिस्तान में इसको जो इम्प्लीमेंट करवाने में ज़्यादा हेल्प कर रहा है वो आपकी आशा फाउंडेशन कर रही है। Then the fourth thing was the recruitment of female labor inspectors. जब भी आपको लेबर लॉज इन्फोर्स करवाने होते थे, देर आर मैनी फैक्ट्रीज जिसमें बहुत ज़्यादा फीमेल वर्कफोर्स काम करती, स्पेशली व्हेन वी लुक एट दी स्टिचिंग यूनिट्स, तो वहाँ फीमेल वर्कर्स काफ़ी काम करते हैं। तो वहाँ के लिए जब इंस्पेक्टर्स होते थे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अदरवाइज चीज़ें चेक करने जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, they used to be male members. So after this law, they have decided that now female workers will be looking after the labor laws, जहाँ female workers ज़्यादा हैं, तो वहाँ female inspectors भी female inspectors ही जाएंगी। So ये कुछ laws equal employment की वजह से थोड़े change हुए, and then a few other changes were made. For example, disabled person के बारे में कि disabled persons ordinance 1981 allotted 1% quota to disabled persons. अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 1% जो है वो डिसेबल्ड की जगह है। देखो, अगेन वी आर नॉट सेइंग कि अगर रनिंग करवानी है तो उसके लिए आप कोई ऐसा बंदा हायर कर लें जिसको शायद कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो कि वो रनिंग ना कर सके। हम ये नहीं कह रहे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टाइपिस्ट हायर करना है, टाइपिंग का काम उसने यूजुअली हाथ से करना है एंड दिमाग से करना है, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है, अगर उस बंदे की टांग में कोई ऐसा मसला है, कोई डिसेबिलिटी है, तो आप उसको रख सकते हैं बिकॉज़ उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो ऐसी डिसेबिलिटी उसकी जॉब को बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं कर रही। सो डिसेबल लोगों का 1% कोटा जो है वो अब फिक्स कर दिया हुआ है, व्हिच मीन्स इफ यू हैव 100 एम्प्लॉइज़, वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ मस्ट बी डिसेबल्ड। और ऑब्वियसली अगर आपको वो रिक्रूटमेंट में आप करते हो और नहीं आता, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट यू नीड टू गिव चांस टू पीपल हु आर डिसेबल्ड। And then in 2002, Ministry of Social Welfare and Special Education asked Cabinet Division for 2% quota of disabled person in all ministries. So ministries में 2% quota जो है that is of disabled people. So जैसा मैंने आपको एक दफा पढ़ाया था कि मेंबर ऑफ प्रोटेक्टेड ग्रुप होते हैं, तो दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ प्रोटेक्टेड ग्रुप बिकॉज अदरवाइज शायद इनको कोई जॉब ऑर्गेनाइजेशन ना दे। सो वंस द कोटा इज सेट टू 1 and 2%, नाउ पीपल विल हैव टू गिव देम जॉब्स। सो इट मीन्स सिंपल मैथ इज दैट इफ यू हैव 1000 एम्प्लॉइज, 10 शुड बी डिसेबल्ड पर्सन एंड 10 आपको उसमें हायर करने चाहिए। सो कोटा सेट करने से ये हो जाता है कि यू मेक ऑब्लिगेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने अब इन लोगों को जॉब्स देनी है। Uh, then some problems which are happening related to EEO, that women are not considered for selection and interview on several grounds. Mostly, they have the reasons that they cannot stay in office late. As most of the organizations are becoming very competitive, they want their employees to stay late. So they have this thing in mind that women cannot stay in offices late. They quit their jobs after marriage. They give more time to their children. They cannot move from one place to the other place if there's a field job or something. So इन reasons की वजह से discrimination हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। And obviously आपको उनको ऐसी जॉब्स पे ही रखना चाहिए जिनमें शायद ऐसी रिक्वायरमेंट्स ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बट it's also not true, because many professional women, they are working in offices and they are growing um into very good careers, तो ऐसा कोई इशू तो नहीं है। but this is how the employer some employers they think that they quit their jobs after marriage,
एंड उनको फिर दोबारा दोबारा रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एंड देन दे गिव मोर टाइम टू देयर चिल्ड्रन, एंड ऑब्वियसली ये एक जगह से दूसरी जगह पे इनका जाना जो है वो प्रॉब्लम होती है. सो वी आर नॉट सेइंग दीज थिंग्स आर ट्रू, वी आर सेइंग दैट दिस इज हाउ द एम्प्लॉयर थिंक्स before hiring women. So this is a problem, especially with the employer's mindset. Secondly, the delaying tactics of writing ACRs. Now, ACRs are known as annual confidential reports. So the delaying tactics of writing ACRs deprive eligible employees from timely promotion, thus violating EEO. ACRs are actually the performance appraisal reports which are written annually, usually annually, by the line manager or by employee's boss, and then it is submitted to the HR department. Usually ACR में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो ये लिखी होती हैं कि ये एम्प्लॉय कैसा है, इसने प्रीवियस ईयर में काम कैसा किया, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, बिकॉज इन परफॉर्मेंसेस पे ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि प्रमोशंस आपकी कैसी होती हैं. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपकी प्रमोशन के लिए पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस आपकी एक्सेलेंट होनी चाहिए, तो हो सकता है कि आपका बॉस जो है वो आपकी एसीआर या तो खराब लिख दे ताकि आपको आगे प्रमोशन ना मिले जानबूझ के किसी भी वजह से, या फिर वो आपकी जो एसीआरस हैं वो लेट लिखे, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है. सो ये भी इश्यूज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में है. सो एसीआरस आर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो एनुअली लिखी जाती हैं और वो एचआर को सबमिट की जाती हैं. यूजुअली आप अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में लिख रहे होते हो एंड देन यू सबमिट टू दी एचआर या एडमिन का जो भी आपका ऑफिसर इसको डील कर रहा होता है. दीज आर आल्सो द प्रॉब्लम्स. देन some problems are related to costly and time consuming efforts, also is a hurdle for discriminated workers to pursue their cases under prevailing law. Costly usually जो अच्छे lawyers हैं उनकी cost बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको नहीं कर सकते. एंड देन टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट बहुत है. फॉर एग्जांपल, एक एक जो बंदा है जो 30-40,000 रुपीज की जॉब कर रहा है, ही डजंट हैव टाइम कि वो डेली कोर्ट पहुंचा हो और डेली उसकी जो डेट्स हैं वो डेट्स में अपेयर हो रहा हो और इन सारे प्रॉब्लम्स में पड़ा रहे. तो क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग वैसे डिप्राइव रह जाते हैं. This is also a problem which should be taken care of. And then lack of education and information also preclude labor to claim their legal rights given under laws. As we're all familiar that most of the employees, especially employees who are working in factories and living in villages and far-flung areas, they do not even have this awareness that there are any laws related to EEO or labor laws or anything. So they don't have the idea. That is also a problem. And then another very big issue is that HR and line managers are not even educated and aware of EEO laws. Even जिन लोगों ने EEO laws का ख्याल रखना है, वो खुद ही एजुकेटेड नहीं है. उनको खुद ही आइडिया नहीं है कि ये लॉज वो कैसे बनाएंगे एंड किस तरीके से करेंगे. सो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो इशू बनता जा रहा है. सो organizations should also make sure that their HR managers and their line managers who are writing the ACRs, who are looking after the HR issues, should also be aware of these EEO laws. If they are not aware, obviously वो implement नहीं कर सकेंगे. Then, as we talked about, that most of the jobs are filled through references and relationships, which is again the EEO issue. Ethnicity, regional belongings, and alumni also play role in selection. For example, if somebody has studied from one particular university, तो अगर उसी यूनिवर्सिटी का कोई जो कैंडिडेट है वो आया है, उसने अप्लाई किया है, even if you give preference based on only based on the alumni, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बन जाता है. या किसी एक रीजनल जगह से उसका ताल्लुक हो तब भी आप
जो है इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझते हो। इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कंडीशंस, women आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जो हमने अभी बात भी की कि जो हरासमेंट के लॉज हैं 2010 के बने हैं, तो अगर वो सेक्सुअल हरासमेंट, इवन नॉट ओनली women बट men आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ दिस सेक्सुअल हरासमेंट, सो इसके लॉज की भी अवेयरनेस और बहुत सारे इश्यूज हैं। नो सेपरेट और एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर women, this is also a problem. For example, washrooms and other working facilities are not there for women separately. And then lack of facilities for disabled persons. So many organizations, especially organizations जिनकी buildings बहुत पहले बनी हुई हैं, वहाँ ये issues हैं कि वहाँ disabled के लिए facilities नहीं है. For example, you don't have a lift या रैंप का होना लाजमी है ताकि व्हील चेयर आप चला सको या लिफ्ट के थ्रू एक से दूसरे फ्लोर पे जा सको। एंड देन अगर कहीं स्टेयर्स आ जाती हैं और साइड पे स्टेयर्स के रैंप नहीं बनी हुई जिससे आप व्हील चेयर गुजार सकते हो, इस तरह की फैसिलिटीज। एंड फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट वॉशरूम्स, तो वॉशरूम्स में हमेशा व्हेनेवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ वॉशरूम्स, आपको उसमें एक वॉशरूम जो है वो डिसेबल्ड के लिए बनाना पड़ता है। तो यूजुअली जब आप बिल्डिंग्स को प्लान कर रहे होते हो, यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपने डिसेबल्ड के लिए और जेंडर, दोनों जेंडर्स के लिए सेपरेट फैसिलिटीज जो हैं वो रखनी है। तो दिस इज आल्सो equal employment opportunity issues. Now, uh, suppose different organizations, if they have this EEO violation issue, how can we detect it? Although it is very impossible to detect the EEO violation, because होता ही है कि अगर उन्होंने किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना हो तो HR और द एडमिन इज स्मार्ट इनफ कि वो क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को उस तरह फिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दे वांट टू फेवर पर्सन ए, तो पर्सन ए के इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा कर देंगे, शोइंग के वो ज़्यादा एलिजिबल था, और शोइंग के दूसरा बंदा एलिजिबल नहीं था, उसके मार्क्स कम कर दिए। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है आप अवॉइड कर सकते हैं। बट स्टिल थोड़े से कुछ ऐसे टैक्टिक्स हैं, थोड़े से इंडिकेटर्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि आप ईईओ वायलेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है या नहीं हो रही। सपोज एम्प्लॉय परसेंटेज एंड जियोग्राफिकल कंपैरिजन। नाउ suppose if you say that in one area, say any geographical area, there are 40% women who are potentially capable of doing the jobs and 60% men. So when you talk about geographically, 40% are women and 60% are men who are capable or who are applying for jobs. आप यही देख लें कि आपकी जो क्लास की परसेंटेज होती है, एक किसी भी एक क्लास की, उसमें भी मोस्ट ऑफ द women आर स्टडिंग, मोस्ट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो वो अज्यूम ये कर लेते हैं कि सब ने बाद में जॉब्स करनी है। सो अगर एक ज्योग्राफिकल एरिया में देर आर 40% women एंड 60% men, ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब है से वन सिटी और वन प्रोविंस। नाउ इफ यू गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड उनका नंबर जब काउंट करते हैं, तो आपको पता ये चले कि फॉर एग्जांपल वहां 90% men are working and only 10% women are working. So 40% women are capable to work, but only 10% are working in organization. At the same time, 60% men are available to work, but 90% people are working in an organization. So ये आपका जोग्राफिकली कितने लोग हैं उस एरिया में वो आर पोटेंशियली केपेबल, एंड ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परसेंटेज उसकी क्या है। सो एम्प्लॉय परसेंटेज एंड ज्योग्राफिकल कंपैरिजन जब आप करते हो, तो सपोज हम और कोई फैक्टर डिटर्मिन इसमें नहीं कर रहे और कोई फैक्टर कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन अगर all women they are ready to work and all men they are ready to work,
सो ये परसेंटेज भी फिर 40 and 60 होनी चाहिए थी. नाउ बिकॉज ये 40 से 10 हो गए हैं और ये 60 से 90 हो गए हैं, तो देर इज वन इंडिकेशन. वी कैन नॉट से इट फॉर श्योर, बट वी आर सेइंग दैट देर इज ओनली वन इंडिकेशन दैट maybe in this organization they discriminate women to become their employees, and they encourage men to become their employees. Again, it is not 100% set formula that you can apply and you can claim that there is EEO violation, but this is one indicator. The second method, which is famously used, is just to detect if there is any violation of EEO, is recruitment versus selection. For example, now if we have, for example, 1,000 applications and there were uh, 500 women who applied for the job and there were 500 men who applied for the job. So male and female ratio is the same. 500 men and 500 women applied for the job. They have sent their applications. Now, what happens is in the very next phase, when the organization is screening down or shortlisting the candidates, they call 400 men for the interview or the test, and they only call, for example, say 50 women for the interview or the test. And then they go for different more tests, and in the next stage there are only 10 women, and in the next stage here there are, for example, 350 men. If they are coming through a proper channel system, then it is fine, but let's suppose this is happening. And then when we talk about the final selection, that who you give the employment letters to, तो फाइनल जो सिलेक्शन है उस तक हम पहुंचते पहुंचते हमें पता चले कि एक फीमेल को हायर किया है एंड इधर हो सकता है सपोज 99 मेल्स को हायर कर लिया है. सो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ कि रिक्रूटमेंट तो आपके पास आई थी 500 की लोगों की, बट सिलेक्शन में आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो और हर स्टेप पे आप यू आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ women in shortlisting, and eventually you're going to hire one, and here you're hiring 99. So same number of candidates applied as women and men, but only one woman is being hired and 99 male members are being hired. So this is also another indicator which can tell us that there might be a problem with EEO laws. Now, uh, sometimes we just when we are just trying to see if there is any discrimination, uh, we see that there is a discrimination, but sometimes uh, organizations have a valid reason to not to select one type of people and to select the other type of people. Maybe to a person who doesn't know much about EEO laws, maybe to that person, it looks like the EEO violation, but it is not the EEO violation. Why? Because there are some reasons. For example, there is one concept known as bona fide occupational qualification. Now, what is this? Bona fide occupational qualifications are employment qualifications that employers are allowed to consider while making decisions about hiring and retention of the employees. There are some qualifications which the employers are allowed to consider. For example, a bona fide occupational qualification as a mandatory requirement for bus drivers and airline pilots for safety reasons. For example, इसमें ये क्या कह रहा है कि sometime the age is the reason why you retire the bus drivers and the airline pilots may be a little earlier.
अब कहने को तो शायद ऐसा हो रहा है कि इनको रिटायर कर रहे हैं बस ड्राइवर्स को बिकॉज ये एज ज्यादा हो गई है, तो एज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एज, जैसे हम सबको पता है कि एज की वजह से हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं। सो ड्राइविंग में एंड फ्लाइंग में आपको रिफ्लेक्सेस जो हैं वो 100% हद तक चाहिए होते हैं। So if you're retiring these people a little earlier than normal people, for example 60 और 65 की एज में, इनको अगर आप रिटायर कर रहे हो फॉर एग्जांपल 50 की एज में, तो वो 10 इयर्स जो आप अर्ली इनको रिटायर कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन, बट दैट इज द बोनाफाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर कंसिडर कर सकता है while dealing with people. Further, for example, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट्स बनानी है तो आप उसमें मेल या फीमेल मेंबर्स जो हैं एज मॉडल्स रखना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली बोनाफाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन के तहत इन एन एडवर्टाइजिंग अ मैन्युफैक्चरर मेंस क्लोथिंग मे लॉफुली एडवर्टाइज फॉर मेल मॉडल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो सिर्फ मेंस क्लोथिंग में डील करता है, तो वो जब ऐड देगा कि उसने कुछ मॉडल्स अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए रखने हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखेगा कि ओनली मेन कैन अप्लाई। सो देखने में हो सकता है आपको डिस्क्रिमिनेशन लग रही हो, बट उसकी मजबूरी ये है कि उसको चाहिए ही मेल मॉडल्स। व्हाई? बिकॉज उसकी जो क्लोथिंग लाइन है वो है ही मेंस के लिए। सो यहां भी आपने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते, बट आप ये कहेंगे कि ये उसकी बोनाफाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन है, उस ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट है कि वो क्वालिफिकेशन उसके पास हो। सो यू कांट से इट इज द ईईओ वायलेशन, बट इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। सो अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो, पहले आप इस चीज का ख्याल रखें कि क्या ये बोनाफाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन के तहत तो नहीं हो रही। The second is the business necessity. बिजनेस नेसेसिटी का मतलब है कि कई दफा आपको ऐसी जॉब होती है कि उसके लिए सर्टेन टाइप ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड। So business necessity is a legal concept that can be used to justify the employer's decision to use employment criteria that disappropriately affects a particular group. Disproportionately affect करने का मतलब ये है कि आप कुछ लोगों को कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हो और कुछ लोगों को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हो based on the assumption that the company has a legitimate reason, a legal reason, or a valid reason to do so due to the needs of the business. For example, if we talk about washroom attendants, so a female washroom cannot have male attendants, and a male washroom cannot have female attendants. Same goes for uh, uh, prison guards. For example, for a prison, for a male prison, you cannot hire a female prison guard. The same way, if we just talk about the printing of some religious books, so then you favor people belonging to that religion, जिसकी वो book print हो रही है, and you definitely disfavor or you simply reject the people belonging to other religions. So इस तरीके से आपको जरा देखना होता है कि कौन सी चीजें बिजनेस की नेसेसिटी है कि बिजनेस उसके बगैर नहीं चल सकता। Again, these are not discriminations. This is not against the EEO laws, but this is a business necessity जो लोगों को चाहिए होती है, एंड एम्प्लॉयर की मजबूरी होती है कि उसने उस तरह के लोग हायर करने होते हैं। देन वी हैव द प्रॉब्लम, जब हमने बात की थी कि ड्यूरिंग द जॉब भी कई दफा आपको लग रहा होता है कि लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। Why? Sometimes the type of experience is the requirement for promotion. अब इस पे एक एग्जांपल थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, तो फिर आपने थोड़ा सा इसको समझना। फॉर एग्जांपल, आपने एक असिस्टेंट मैनेजर है
और उसको आपने मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट करना है। असिस्टेंट मैनेजर है और मैनेजर की पोस्ट पे आपने उसको प्रमोट करना है। फाइन। आपकी पॉलिसीज में ये लिखा हुआ है या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रमोट होने की, सपोज वो ये हैं कि 10 इयर्स उसका एक्सपीरियंस हो, 10 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एंड फॉर एग्जांपल 16 इयर्स की उसको एजुकेशन चाहिए। 16 इयर्स एजुकेशन एंड 10 इयर्स एक्सपीरियंस, ये आपको दो चीजें रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट अ पर्सन फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर टू अ मैनेजर्स पोजीशन। नाउ आपके पास यहां दो कैंडिडेट्स हैं, ए एंड कैंडिडेट बी। बोथ हैव 10 years of experience and 16 years of education. Both have the same qualities. But आप ए को प्रमोट कर देते हैं एंड बी को प्रमोट नहीं करते। नाउ जनरली शायद ये लग रहा हो कि ये आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि विद सेम एक्सपीरियंस ये प्रमोट नहीं हो रहा और ये प्रमोट हो रहा है। बट मे बी बैक एंड पे ये हो कि जो 10 years का एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस में ए जो है इसका 10 years का एक्सपीरियंस विद इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहा है। एंड इस बी का जो एक्सपीरियंस है वो मे बी 6 years का इस ऑर्गेनाइजेशन में हो और 4 years का इसका किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में हो, या 4 years का एक्सपीरियंस शायद डायरेक्टली रेलिवेंट ना हो, से प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था। सो व्हेन वी कंपेयर दिस 10 years एक्सपीरियंस विद दिस 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो हमें आइडिया ये होता है कि दिस ए पर्सन इज मोर सीनियर, नॉट सीनियर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ years of experience, but in terms of the seniority, because आपके पास इसने 10 साल लगाए हैं। सो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ए इज द सीनियर एम्प्लॉय। तो इफ ए इज अ सीनियर एम्प्लॉय और आपकी पॉलिसी ये कहती है कि अगर ऐसा इशू हो तो देन यू नीड टू गिव प्रेफरेंस टू योर सीनियर एम्प्लॉय। तो अब इस वजह से आपने इस एम्प्लॉय को सीनियोरिटी की बेस पे किया है कि ये आपका सीनियर है और इसको आप ए पे ले गए हैं। सो इस तरह भी अगर आपका जो है वो अगर कोई ऐसा आप डिसीजन कर रहे हो तो दिस विल आल्सो बी काउंटेड एज a normal decision and not the violation of EEO, because यहाँ EEO की वायलेशन तो नहीं हो रही। उनकी पॉलिसी ये कहती है कि जिस बंदे का एक्सपीरियंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा होगा उसको आप प्रमोट करेंगे। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जिसमें आप कहते लगता है कि ईईओ वायलेशन हो रही है, बट ईईओ वायलेशन नहीं हो रही होती। देयर आर लेजिटिमेट रीजंस जिसकी वजह से आपको लोगों को प्रमोट करना पड़ रहा होता है, या लोगों को सिलेक्ट करना पड़ रहा होता है, या लोगों को रिक्रूट करना पड़ रहा होता है। So this is all for today's lecture. Let's just get a little recap. We started with the Constitution, and इस वीक हमने पहला जो लेक्चर किया वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से शुरू किया कि देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड, एंड कोई भी सिटीजन जो है ही और शी इज अलाउड टू एंटर इनटू एनी लॉफुल प्रोफेशन and any lawful trade. And the Article 25 also addresses the discrimination, prohibition of discrimination on gender or other basis. And we talked about some factory laws. ये फैक्ट्रीज में कंडीशंस किस तरह की होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए, लोगों का ख्याल करना चाहिए। women and children should not be given jobs which are not suited to them. And then we talked about कि जब भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर दें तो रिटन फॉर्म में दें, एंड जॉब की नेचर, टेन्योर, अपॉइंटमेंट, पे अलाउंसेस, वर्किंग आवर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें सारा कुछ लिखा हो। देन वी टॉक्ड अबाउट कि टर्मिनेशन अगर आपने करनी है तब भी आपको इन राइटिंग देना पड़ेगा। एंड देन वी इन वेरी डिटेल वी टॉक्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दैट आर अलाउड टू वर्क, नॉर्मली 48 आवर्स पर वीक एंड 9 आवर्स पर डे, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट माइन वर्कर्स, तो उसमें हमने कहा कि 8 आवर्स जो हैं दैट इज पर डे एंड 48 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सम मैटरनिटी बेनिफिट्स, 6 वीक्स की आपको पैटर्नल लीव पेड मिलनी चाहिए।
Then we also talked about that gazetted holidays are the basic right of every employee. अगर आप gazetted holidays में employee को बुला के उससे कोई काम करवाते हैं तो फिर आप उसको alternate holiday देंगे या उसको उसकी पेमेंट करेंगे. Drainage की facilities, cleanliness की facilities, ventilation and hygiene of the workplace should be maintained. Stairs, entrances, and all exit points should be well lighted, and safety should be ensured. And then we also talked about the equal employment opportunity और किसी किस्म की discrimination नहीं होनी चाहिए, overcrowding नहीं होनी चाहिए फैक्ट्री में. देन वी टॉक्ड अबाउट कि अगर आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर लेस देन 1000 तो आपको उनको सैलरी जो है वो वेज पीरियड के 7 डेज के अंदर अंदर पे कर देना चाहिए आपको रिम्यूनरेशन. और अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर 10 डेज के अंदर अंदर आपको उनको सैलरी दे देनी चाहिए. मिनिमम वेज एज पर टुडे इज 17,500. वर्किंग डेज आर 6 days per week and working hours are 48 hours पर वीक. देन ओवर टाइम का हमने फैक्टर डिस्कस किया कि अगर आपको एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करवाना पड़ता है अडल्ट एम्प्लॉय से, उसको आप ओवर टाइम पे करते हो किसी फैक्टर के हिसाब से, फॉर एग्जांपल 1.5 और 2 के फैक्टर से. देन आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट किसी भी जो एम्प्लॉय को किसी भी बेस पे इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, कलर, एज, फिजिकल डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट. एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अफर्मेटिव एक्शंस कि ये क्या होते हैं. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो इट शुड नॉट बी गिवन इन फ्यू हैंड्स. सबको कोशिश करनी चाहिए कि सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंड ऑफ लाइफ कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहना चाहिए. देन वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स दैट इक्वल रिम्यूनरेशन होनी चाहिए फॉर मेन एंड वुमेन. मैटरनिटी बेनिफिट्स की इन्हांसमेंट 2000 में हुई लॉज के थ्रू. देन सेक्सुअल हरासमेंट के लॉज पास हुए 2010 में और अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. Recruitment of female inspectors for female labor workforce. Then we talked about disabled person के इनका 1% कोटा है and 2% industries में कोटा है. तो if you have 100 employees for example, तो 1% कोटा means that एक आपका employee जो है वो minimum disabled आपको hire करना है. And we talked about a few other things के क्या perceptions हैं लोगों की और क्या क्या EEO की अभी भी problems चल रही हैं. Some people have this assumptions about women workers कि वो ऑफिस में स्टे नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम के लिए. आफ्टर मैरिज दे क्विट देयर जॉब्स, दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन व्हिच इज व्हाई दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ द जॉब, एंड समटाइम्स they are unable to move from one place to the other place because of business reasons. ये इश्यूज हैं. देन राइटिंग ऑफ ACRs, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, उनमें लोग इशू करते हैं ताकि लोगों की प्रमोशन ना लोगों की प्रमोशंस रुकती हैं. दैट इज आल्सो अगेंस्ट EEO. देन देर आर टाइम टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स हैं और कॉस्टली एफर्ट्स हैं लीगली क्लेम करने की किस चीज़ों के. लैक ऑफ एजुकेशन इज एंड अवेयरनेस इज another issue. And then HR and line managers are they themselves are not even aware कि किस तरीके से EU laws को implement करना है. Then we talked about that most of the jobs are filled through references, which means या तो nepotism होती है, cronyism होती है, अपने लोगों को अपने जानने वालों को जॉब ज़्यादा दी जाती हैं, या फिर एथनिसिटी, रीजनल बिलोंगिंग एंड अलमनाई की वजह से भी कई दफ़ा दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है. सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज हैं, सेपरेट एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं है फॉर वुमेन एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर डिसेबल्ड पर्सनस. एंड देन वी टॉक अबाउट कि किस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि EEO वायलेशन हो रही है. तो हमने कहा कि ये देखना चाहिए कि उस ज्योग्राफिकल एरिया में कितने पोटेंशियली लोग हैं जो जॉब कर सकते हैं, वो किस तरह की डाइवर्सिटी है, किस तरह के लोग हैं. एंड देन ऑर्गेनाइजेशंस में जो जॉब कर रहे हैं उनकी परसेंटेज और डाइवर्सिटी कैसी है. सो इफ दे मैच इट इज़ फाइन, इफ दे डू नॉट मैच एंड देयर इज अ क्लियर गैप तो आप समझ सकते हो कि EEO वायलेशन शायद हो रही है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन कि आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आई और इवेंचुअली कितने लोग आपने उसमें से किस तरह के लोग हायर किए. तो उसमें भी आपको डिटेक्ट कर सकते हो कि आप कोई ना कोई इश्यूज शायद EEO के हो रहे हैं.
देन वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स कि जिसको समझा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, बट एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। बोनाफाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन, ये ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आपको नेसेसरली चाहिए होती है। और जिस तरह अर्ली रिटायरमेंट कर देते हैं बस ड्राइवर्स एंड एयर पायलट्स की, एयरलाइन पायलट्स की, बिकॉज सेफ्टी के इश्यूज होते हैं। सो दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। एंड इस तरह हमने कहा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में या मैन्युफैक्चरर जो है वो मेन मॉडल हायर करता है। क्यों? बिकॉज उसकी क्लोथिंग जो है वो मेंस क्लोथिंग है। सो वो कर सकता है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस बिजनेस नेसेसिटी के कई दफ़ा आपकी बिजनेस की नेसेसिटी होती है कि आपको उस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम अटेंडेंट्स हैं, तो फीमेल वॉशरूम्स के लिए मेल अटेंडेंट्स नहीं हो सकते। एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि कई दफ़ा आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशन जब प्रमोशन के लिए यूज़ होता है, तो जो करंट आपका एम्प्लॉई है, जो आपके पास ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस है या किस तरह की एजुकेशन है, शायद आप उसको आप प्रेफर करते हो। एंड हो सकता है किसी दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर सको। सो दिस इज ऑल। इसको प्लीज दोबारा से चीज़ों को देखें। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स, रीड देम अबाउट read about them on the internet, and then you can ask me questions. So thank you very much. This is all.